Hello learners, welcome to the course Cyber Security and Digital Forensics Essentials. In this week, we will be learning demanding topic in cyber security field, that is vulnerability assessment and penetration testing. In this module, we will be covering following points: introduction to VAPT, passive information gathering, active information gathering, and then we will see the demo of Nessus tool. सबसे पहले हम वल्नरेबिलिटी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने घर के डोर्स एंड विंडोज को हाउस सिक्योरिटी के लिए लॉक करके जाते हैं, पर गलती से एक बार हम एक विंडो को लॉक करना भूल गए। ये ओपन विंडो एक तरह से हमारी वीकनेस है। मोर स्पेसिफिकली इसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, जिसका की फ़ायदा चोर उठा के हमारे घर में चोरी कर सकते हैं। इन साइबर सिक्योरिटी, अ वल्नरेबिलिटी इज एनी मिस्टेक और वीकनेस इन द सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, डिज़ाइन, implementation, or any internal component that may result in the violation of system security policy. Few examples of vulnerabilities are missing data encryption, missing authentication for critical function, reliance on untrusted inputs in a security decision, unrestricted upload of dangerous file types, etc. There are many types of vulnerabilities and each vulnerability is unique in itself. Attackers need to use a specific piece of code or method known as exploit to attack the system. If a device with a vulnerability is connected to the internet, it may be possible for attackers who are working remotely to exploit that device. Now coming to what is vulnerability assessment and penetration testing. In the same example of house security, it is like checking whether all doors and windows are properly closed or not. अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो vulnerability assessment and penetration testing are both security services that focus on identifying security bugs in a software program, in a server, in a computer network, or in the complete system infrastructure. These two terms, vulnerability assessment and penetration testing, are very much related but different in nature and objective. We will see this in detail next. Basically, in cyber security, a vulnerability assessment is a rapid automated review of network devices, servers, softwares, and systems to identify key vulnerabilities and configuration issues that an attacker may be able to take advantage of. While penetration testing attempt to exploit the vulnerabilities to determine whether unauthorized access or any other malicious activity is possible or not. It aims to identify which flaws pose a threat to the application. Penetration testing का एम ये शो करना होता है कि कोई भी फ्लॉ होने पर कितना डैमेज एक्चुअली में हो सकता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग से पहले डेटा एंड सॉफ्टवेयर का बैकअप ले लेना चाहिए, सो दैट अगर टेस्ट से
कोई डेटा लॉस होता भी है तो वो वापस बैकअप से रिकवर हो जाए। मोर स्पेसिफिकली इसको हाउस सिक्योरिटी के एग्जाम्पल से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सारे लॉक्स को चेक करना कि वो ओपन हैं या क्लोज हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है। जबकि अगर कोई लॉक ओपन रह गया है तो हाउस में घुस के एक प्रूफ के लिए कोई भी वैल्यूएबल चीज को चुरा के लाना पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। इन केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, vulnerability assessment is starting point for testing security, which has wide focus. With the help of vulnerability scanning tools, it gathers information and generates the report. While penetration testing is advanced security test which has narrow scope and it dig deeper, more like a human being. The deliverables from VAPT are mainly executive report and technical report. Executive report is a high-level overview of the activities conducted, summary of the issues identified, ratings of the risk, and action items. While the technical report is a more detailed report explaining each issue identified, step by step proof of concept for each of the issue, code and configuration examples to fix the issues and reference links for further details. VAPT process can be manual or automated. Both has their pros and cons. रिजल्ट की एक्यूरेसी के टर्म्स में मैनुअल VAPT हमेशा ही बेटर चॉइस होती है, क्योंकि ऑटोमेटेड टूल्स सिंपल लॉजिक पे बेस्ड होते हैं जो कि सिग्नेचर्स और बिहेवियर को चेक करते हैं, जबकि मैनुअल VAPT रियल लाइफ हैकर्स की बिहेवियर को मिमिक करता है। However, manual VAPT is time consuming and cannot apply at large scale. Next, हम complete VAPT process को डिटेल में देखते हैं। The first and foremost thing is to define the scope at the time of performing tests and assessment. This scope will specify the assets to test and the kind of assessment to be done. After this, based on the scope, more information is gathered about the components to decide on which type of testing to be used. इस स्टेप को हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप भी बोलते हैं। इसके बाद vulnerability detection का स्टेप आता है, in which assets are scanned using various vulnerability scanners for the detection of flaws. After this, information analysis and planning is employed to scrutinize the flaws that are identified, and this is followed by making a plan to resolve all the identified issues and for the penetration into the system. Next, in the penetration testing, the exposed target systems are actually attacked and the penetrated leveraging the flaws identified above. इसके बाद privilege escalation का step आता है, in which an attempt is made to increase the access using higher privileges, which include root or administrative access to the system. इसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है और रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती हैं। रिपोर्ट्स के अंदर वल्नरेबिलिटी की फाइंडिंग्स और हर वल्नरेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग रिकमेंडेशंस दी जाती हैं,
जिससे कि नेसेसरी एक्शन लेके उनको डील किया जा सके। आफ्टर दिस क्लीनअप इज डन टू रिवर्ट एनी चेंजेस। VAPT प्रोसेस को अलग अलग लेवल पे किया जाता है, जैसे कि नेटवर्क लेवल, वेबसाइट लेवल, मोबाइल एप्लीकेशन पे, फिजिकल लेवल पे या फिर सोशल इंजीनियरिंग लेवल पे। एट नेटवर्क लेवल, exploitable vulnerabilities in the systems, specifically networks and network devices such as switches, routers, firewalls are focused. VAPT of web applications is done to identify various possible attacks on websites like XSS, CSRF, SQL injection, etc. मोबाइल एप्लीकेशन VAPT में मोबाइल ऐप्स की उन वीकनेसेस पे फोकस किया जाता है जिससे कि दूसरी ऐप्स प्रिविलेज एस्केलेट कर सकती हैं। फिजिकल वल्नरेबिलिटीज लाइक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सर्वर्स एंड नेटवर्क लोकेशन इज चेक्ड। सोशल इंजीनियरिंग VAPT consists of an ethical hacker conducting different social engineering attacks such as phishing, USB drops, or impersonating that a person could face during the course of their work. The goal of this test is to identify weaknesses in a person, in a group of people, or process, and identify vulnerabilities with a clear path to remediations.